tell me something about yourself. Good morning, sir. Thank you for the opportunity. My name is Keshav Agrawal. Uh, I have recently qualified chartered accountancy course in November 22, and I belong to Kishanganj district. It is a place near Siliguri, and I have done my schooling from CBSE board and ICC board, and graduation from Calcutta University. Since 6 years, I am staying in Kolkata, and I have done my articleship from two firms, Agarwal Sahay and Associates and Ure and Associates, and I have also worked as an audit associate in ARVG and Company. So all these firms are well known for stat audit, internal audit, and taxation related works. Uh, and if I talk about my stat audit profile, I've handled few clients, which is involved in job work process services or travel agency services, and also logistics and warehousing services, in which I have performed test of details, test of controls, vouching, verification, and verifying different accounts such as accounts payables, receivables, revenue purchase, payroll, inventory, and also done testing of materiality testing or assessment testings, and also Caro reporting, sir. And since my articleship journey only, sir, I was very much interested in joining a top firm, and I'm even and stat audit is a profile in which I'm very much deeply interested, sir. And even I've scored exemption in my CA finals in audit paper. So I'm very grateful that I got this opportunity to give the interview, and I will be very thankful, sir, if you select me for the role. Thank you so much. Anything else if you want to ask, please ask. तो छोटा कर लेना है आंसर को। तो ये 1.5 मिनट के अंदर में से आपको थोड़ा लंबा होगा, तो ठीक है। थोड़ा छोटा कर लेना, ज्यादा अपना बताने का दरकार नहीं, कैसे स्कूल किया वो किया। थोड़ा और ऑडियो क्वालिटी थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा आपको, ठीक है। थोड़ा जोर से बोलना है, और बाकी थोड़ा जोर से बोलना है, लिख लीजिए। और थोड़ा आंसर को छोटा करना है बस, ठीक है। और आप थोड़ा हिलता है बोलने का टाइम में, तो थोड़ा हिलिए कम, बस। थोड़ा मूवमेंट करता है, मूवमेंट थोड़ा सा कम करना है, लिख लीजिए, मूवमेंट को कम करना है। बाकी ऑडियो थोड़ा सा और बढ़ेगा, और छोटा आंसर चाहिए 1.5 मिनट का। बाकी आप ठीक है, आपका जो बोल रहे हैं कि what were your major observations during the audit? Give me any three. So during the audit of the manufacturing job industry, the major observation was they were importing actually the huge machines from foreign. ऑडियो क्वालिटी इम्प्रूव करिए थोड़ा जोर से, नहीं तो कुछ रख लीजिए, आवाज आपका थोड़ा सा हाँ जोर से बोलेंगे तो इंटरव्यू में अच्छा रहेगा। So actually, yes, sorry. So the company which was in the job work process were importing some machines, heavy machines from foreign in credits, and they were not recognizing the foreign exchange and losses in the closing date as per the compliance of the AS, and they were just not recording the revenue and the losses, sir. This was a major observation. Secondly, sir, I found a few cases of pure split up. Actually, the management was overriding its control, and it was splitting the PO so that he does not have to take authority from the higher level of management. And this was an observation, sir. And one of the observation was, sir, during the very analysis of salary expenses, I just came to notice that there was a huge increment in the salary as compared to the last year. When I then asked for the details, for the month-wise details, I came to know it. I analyzed that during the month of January, February, and March, there was a huge increment in the salary. So I took the biometric register, and I just analyzed that, and I came to notice that they were paying salary to the employees, even then they were absent in the number of days. So after inquiring the management, they said that at first they did not agree, but later on they said that it was for the tax planning purpose. So this was my major observations. Okay. Then you did the audit, internal audit of healthcare and hospitality industry. Okay. What were your major observation during this? So I did the audit of Bhagirathi Nyotia Women's and Child Care Center, but the actually scope was very much limited. I have done the audit of one of the quarter where the management have the discussion with our partners, and they have decided that they will do the inventory. There was a pharmacy actually which was sending medicines to the hospital. So they decided to have a physical counting of the medicines. So I have found a lot of discrepancies over there. There was overstocking of some few items and understocking also.
and few damaged and expired medicines were also kept in the store as good stock. And this was major observations. And one of the issues of the management was that actually, the newborn babies were, kept in ventilators for some times after they were born. And billing was done on the number of hours, actually. And the staffs were maintaining a register which was manual. And the basis of that, they were billing the invoices. So the management has a concern that the billing was not proper. So we reconciled that manual register with the billing in the books of accounts, and we inform the management about the underbilling so that they can bill the customers according to that. How to do So the this revenue was cutoff? kind of How to do revenue cutoff? so revenue cutoffs. It's like it is to ensure that the sales which has occurred during the financial year recording in the current period only. For that, we will take 10 to 15 invoices at the closing of the reporting period, at the last of the reporting period, and few invoices at the starting of the period in which we are doing the audit. And in respect to that, we'll perform test of details. We'll check the invoices, we'll check the e-way bills and Incoterms in the invoices, so that to identify when the controls is being transferred, when the risk and reward is being transferred. If we see that we can also check the goods outward register when the goods are being dispatched. If it is dispatched after 31st March, means the control is transferred after if it is recorded revenue in the current period, we'll reverse the revenue, sir. And we will also check the sales return after 31st March. It is possible that to increase the sales, they inflate the sales, they have recorded sales in the end of the financial year and shows at sales return. So we'll try to find out the reasons for sales return and also verify with the GST returns whether the proper How to do audit of data? Audit of debtors. So audit of debtors. So the audit will be done on the basis of assertions. So for the debtors we have, first of all, we check the valuation. Valuation should be as per the Ind AS 109. Okay, and also if there is a foreign exchange payment receipts, then we also check that it is a monetary item. So the valuation should be at the reporting date to exchange rate on the reporting date. Okay, so next will be the completeness. For completeness, we'll check that we'll select some parties for external confirmation, and we'll verify the balances of that party with the trial balance and the balance sheet at the end of the date. And we can also take some top 10 parties and related parties, and respect to that, we'll ask for the ledgers of our books, our ledger in their books of accounts, and we reconcile their ledger with our books of accounts with the help of Excel, and to find out that all the transactions are properly recorded, sir. And for presentation should be as per the Ind AS and Schedule 3. And for existence, we'll ask for external confirmation from the debtors, and should be independent, that we directly receive the confirmation from the debtors. However, if they does not confirm, then we'll check for subsequent clearance in the bank account. And for rights and obligations, we can perform test of repairs. We can vouch the invoices of sales invoices, few sales invoices. This is how we'll do the audit of debtors. And generally, we can also do scrutinize the ledger of related parties, sir. Whether the transactions are as per the arm's length price or not. And आंसर छोटा also दो, आंसर छोटा दो। आंसर आप कोशिश ये करो कि आंसर आप 1.5 से 2 मिनट का दो, कि वो आपको क्रॉस क्वेश्चन पूछ सके। आप सारे क्वेश्चन का जवाब दे देगा तो आपको क्रॉस क्वेश्चन क्या पूछेगा, समझ रहे ना? तो थोड़ा टेटर का है तो थोड़ा बताओ, फिर वो थोड़ा क्वेश्चन पूछेगा, थोड़ा जवाब देना, तो उसको क्रॉस क्वेश्चन पूछने दो ना, 2-4 ठो, समझे? तो सब सर कुछ आप एसोसिएशन पूछेगा अगर तो हम उसको बता हाँ हम पूरा अगर मतलब एसोसिएशन बता रहे तो तो भी पता अपना है, आई लाइक विल डू द कंफर्मेशन ऑफ डेटर्स हो गया, तो कंफर्मेशन ऑफ डेटर्स हो गया ना। अब इफ यू नॉट फाइंड, उसको सवाल पूछने दो, आप सामने वाला को पूछने दो, आपको इंटरव्यूअर को पूछने दो। यू गॉट माय पॉइंट ना? तो अब सर फिर इंटरव्यू को पूछने तो दो। क्या करना है? तो सर थोड़ा एक थोड़ा बताओ, एसोसिएशन बोलने थोड़ा के बाद थोड़ा रुक बताओ, जाएंगे? थोड़ा सर्जन बोल के थोड़ा बताओ, पर पूरा एकदम डिटेल में मत बताओ। एकदम सब कुछ बताने लग जाएगा तो थोड़ा थोड़ा बताओ, सब चीज थोड़ा थोड़ा बताओ। पूरा डिटेल में बताएगा तो फिर तुमको क्रॉस क्वेश्चन कैसे पूछेगा? और 1.5 से 2 मिनट से ज्यादा छोटा छोटा आंसर देने को, ठीक है? दीज आर द थिंग्स। हाउ टू डू द ऑडिट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। आप चाहेगा कि आपको क्रॉस क्वेश्चन पूछे तो आपका ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेगा ना उसे, और डिफिकल्ट पूछ लेगा, नहीं तो वो समझिए। हाउ टू डू द ऑडिट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। So fixed assets, so we will check the valuation. For that, we'll ensure that all the assets, all the costs which are necessary to bring the ये assets, ऐसे मत all कर। हाँ हाँ, स्ट्रेट स्ट्रेट so all the रहेगा। assets, yes. So all the expenses which are needed to bring the asset in the present locations are capitalized. We will check the depreciation calculations,
and also compliance of sir. आप इधर उधर मत If there देखिए, is, आप स्ट्रेट देखिए, आप if there ऐसे ऐसे हो is, नर्वस हो रहे हैं आप, uh, ये नहीं हो रहा है मेरे सामने hmm, नर्वस होके क्या करेंगे, मुझे ये बात है वापड़ में भी होगी uh, ना। तो स्ट्रेट रहिए hmm, और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आराम से बोलिए, डरिए मत जरा। और आप ऐसे ऐसे जब कर रहे हैं ना बॉडी that, लैंग्वेज, तो वही सबसे ज्यादा बॉडी लैंग्वेज ही चेक करता है आंसर से ज्यादा। ठीक है, तो स्ट्रेट रखिए hmm, अपने आप को, ऐसे हिलिए मत इधर मत उधर, स्ट्रेट रखिए, आंख को हिलाइए बस, बॉडी को मत हिलाइए। ठीक है, हो जाएगा। बोलिए, क्यों ये चीज चेक sir, करता है, if बॉडी लैंग्वेज आपको स्ट्रेट रखना है। ठीक है, हाँ। see, if आपका the हैबिट है asset कि is deal, ये हैबिट है कि आपका टेंशन से हो रहा है? नहीं सर थोड़ा नहीं बोलते सर थोड़ा सा सर हाथ क्या हैबिट मूवमेंट है वगैरह आपका? करता है मेरा थोड़ा हैबिट है क्या आपका? थोड़ा सा। ये जनरल हैबिट है आपका? ओके, ऐसा लग रहा है नर्वस है आप। हम्म, आप नहीं नर्वस नहीं के सर कारण हो रहा है बस कि हैबिट है आपका ये? नहीं 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 हैबिट है सर नर्वस ही नहीं है। थोड़ा सा जब बोलता है सर मूवमेंट हैंड मूवमेंट वगैरह करता है थोड़ा सा वो उसको तो लगेगा बॉडी नर्वस थोड़ा है सा आप, अपने आप। उसको तो लगेगा आप नर्वस अच्छा है पर। ठीक है, तो ज्यादा मत हिलिएगा, अगर होने लग जाए दिस इज फॉर मी लिटिल। अब हैबिट पे बोलेंगे तो गंदा लगेगा थोड़ा सा। हैबिट पे लेके हम्म, थोड़ा गंदा लगेगा। कोशिश करिए थोड़ा सा मूवमेंट कम हो जब आप बोलते समय। ठीक है, ये आपको इंटरव्यू में दिक्कत हो सकता है। ठीक है, आंसर ठीक बोल रहे हैं पर थोड़ा मूवमेंट थोड़ा कम करना पड़ेगा आपको। ठीक है, हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? आउट ऑफ द ऑडिट ऑफ फिक्स्ड एसेट। लिख लीजिए, yes sir मूवमेंट कम करना so है आपको for थोड़ा। मूवमेंट स्ट्रेट रहने का कोशिश करना है। ठीक है, कोशिश करिए ज्यादा आपका फेस नहीं मूव हो, ये नहीं हो, स्ट्रेट करके एकदम हो जाएगा, हम्म, प्रैक्टिस करने से होगा। ओके, हम्म, बोलिए। so if any asset is derecognized, we'll also check the profit and loss calculation. And so for completeness, we'll reconcile, we do a three-way matching. We'll reconcile the fixed asset register and fixed asset schedule and trial balance. So it should properly match. Uh, as for presentation disclosure, we'll check that it is disclosed as per the schedule 3. And existence for existence will do the physical counting of the fixed assets. However, we can also take the physical verification report from the management and see that all the discrepancies are properly dealt in the books of accounts. For rights, we can check the title deeds of the immovable property, and for other assets, we can check the invoices. And general testing also, sir, if the title deeds are not in the name of the company, we'll also report in Caro, sir. And we also check the capitalization of the fixed asset. There should be for example, sir, plant and machinery is installed. It should be capitalized on the date of ready to use. We'll check the installation certificate. For self construction property, we'll check the occupancy certificate. So these are the checkings that we'll do in fixed assets. Okay, what is the exemption in Ind AS 116 leases? Exemption. So exemption are there if any low value asset is there, leases will not apply. And if the lease term is if the rental term is less than 12 months, then leases will not apply. Lease will not apply to it. Okay, next, what is the journal entry in the books of lesser? So for lesser, so lesser, if it is an finance lease, then he will de-recognize the asset in his books of account, and he will recognize the net investment in a lease. And subsequently, then he will just record the he will not charge depreciation in RU asset, and he will record the lease income as per the amortization table. So, and if it is an operating lease, he will just record the lease rental income in the books of account. On the straight line basis. Okay, what will be the journal entry in the books of lessee? So leases, whether it's a finance lease or operating lease, he will just record the RU asset and lease liability. That will be the present value of the future lease payments and the guaranteed residual value. And subsequently, so he will charge the interest in the books of account, his books of accounts, and also depreciation in RU asset will be transferred to the profit and loss account. And if any payments are made, he will just reduce the lease liability accordingly. Okay. What are the external indicators of impairment? So external indicators of impairment are, sir, for there in a strike by the no, sir. External indicators are, sir, there is a significant fall in the market value of the asset, or
there is an economical change or the new technology has arrived, or for a government or a new government regulations which is significantly affecting the value of the assets. So we'll do the impairment. Next, how do you calculate ECL? Like, what will be the accounting for ECL, expected credit loss, Ind AS 109? Expected credit loss, Ind AS 109. So I could not recall it right now. So. Okay. How will you do the audit of creditors? For creditors, yes. So for creditors, we'll check the valuation as that it is compliance with 109, and also that if it is a foreign exchange payment compliance of Ind AS 21. For completeness, we'll check we reconcile the top 10 debtors. We'll obtain the ledgers of our books of account in the creditors ledger and our ledger, their ledger in our books of account, and with the help of Excel we reconcile that it is completely recorded, and also we reconcile with the trial balance. So for presentation should be as per schedule 3. For existence, we ask for external confirmation from the creditors. And so yes, and for rights and rights for obligation, we can check some purchase invoices and expense invoices. That is how we'll do so. How will you do the audit of revenue? So revenue. So revenue. So we'll do first of all we'll check the completeness. For that we can reconcile GSTR 1 and GSTR 3 with our books. We can also, if TDS is deducted, we can reconcile with 26 years, and we can also pick some top parties, related parties, and with the help of their ledgers, we'll ask for their ledgers and reconcile their ledgers with our ledgers. Then, so for occurrence, we can perform test of details vouching. For accuracy, we can check the arithmetical accuracy and the transaction price are properly calculated and correct amount has been credited. So we can check this. For classification, we'll check that compliance of Ind AS 115, and also classification between revenue and expenditure between, and also as per schedule 3 classifications. Okay. Ind AS 115. Yes, sir. What is the definition of transaction price? So transaction price is the amount of consideration that the customer pays to the entity. Basically includes a fixed consideration and variable consideration. Fixed considerations are always form part of the this transaction price, but variable consideration depends upon the future events. Sir. How the variable price is calculated? So there are two methods. One is expected value method, and one is most likely amount. And for expected value methods, if there are more than 2 possible outcomes, we'll just multiply the this range of outcomes with the probability percentage to arrive at the consideration price. But if there are only 2 outcomes, we apply the most likely amount, that what is the most likely chances of the consideration that could occur. Then we'll record the revenue at that price. We'll consider that as a transaction price. What is the 5-step model in Ind AS 115? So the first step is that we'll identify the contract, then we'll identify the performance obligation, then we determine the transaction price, and we'll allocate the transaction price between the performance obligation, and at last we'll record the revenues. Okay. What are the amendments in CARO 2020? So there's a few major changes. First of all, so auditor has to report whether if the fixed asset has been revalued, it is revalued by a registered valuer. In case there is an increment in the carrying value of each class of asset by 10% or more, he has to report. Secondly, so if the company is having any Benami property under the Benami Transaction Act, he has to report on that.
If also he has to report whether the title deeds are not in the name of the company in any proxy company. So, also, sir, he has to give uh, so if also he has to consider that if any stat auditor has left in the resigned during the previous financial year, he have to consider that observation, whether he has considered the issues and observation of the previous auditor. And also he has to disclose that the CSR compliance has been done in the books of accounts or not. And also, sir, if the company is disclosed as a willful defaulter by the banks or financial institution, the details in nature and amount has to be disclosed by the auditor. So these are some few major changes in forward. What are the amendments in Schedule 3? Schedule 3 few amendments are like, so the disclosures have to be given about regarding the aging schedule of trade receivables and trade payables. The aging schedule has to be given. And also, so if the company title is not in the name of the company, in the name of any proxy or in the director's name, you have to disclose that. And also if the company is having any property under the as a Benami property under Benami Transaction Act, he has to report on that. He has to disclose, the company has to disclose that. And also the company assets are revalued by the registered value. It is whether it is revalued by a registered value or not, that he has to report. And CSR disclosures, CSR compliance are done or not, that or disclosure has to give. So. Why you want to join Stat Audit? So stat audit I want to, because it is a profile which so where I will get to get a knowledge of different industry and different processes. And not only this, only CAs can do this stat audits. And also I've got exposure in stat audit during my articleship journey. So that's the reasons I am very much interested in this profile. Why didn't you got a job in campus or off campus earlier? It's been a lot of time, right? Yes, sir. So actually I didn't apply in the campus only. Why? The reasons were that few reasons are that so I was thinking that I should go for practice or job. So I decided that that's why I didn't apply for the campus. Secondly, sir, practice wala nahi bolo. Next. Okay, sir. So one of the reasons is I didn't apply for the campus due to some reasons. After that, I was looking job in off campus, but I didn't got any enough course related to stat audit profiles. A few courses I've received, but it was related to other profiles. So I didn't wanted to join that because it become difficult to change, sir. And I was very much passionate about this profile. ये सब नहीं बोलेगा, उसको बोलेगा कि घर में कुछ प्रॉब्लम हो गया था जिसके कारण हम कैंपस में फॉर्म नहीं भर पाया था और ऑफ कैंपस भी नहीं बोल पाया था. घर का कोई बोल दीजिएगा फैमिली में बीमारी हो गया था, तो दैट्स व्हाई आई वाज नॉट एबल टू appear in campus and also in off campus. Certain situations in home arises. पापा बीमार हो गया, कुछ ना कुछ कैसे करके बीमारी दिखाना पड़ेगा, वो सबसे बढ़िया रहेगा. दैट्स व्हाई आई वाज नॉट एबल टू अप्लाई कैंपस आल्सो एंड ऑफ कैंपस. खुद मत होइएगा बीमार, वो सर्टिफिकेट मांगेगा फिर आपसे, फैमिली होने से नहीं मांगता है. ठीक है, कुछ ऐसा सिचुएशन दिखाएगा जो बीमारी हो गई के कारण आप ना तो कैंपस या ना तो ऑफ कैंपस अप्लाई कर पाया और 6 महीना तक आपका मतलब आप कुछ भी नहीं कर पाया, मतलब इन 6 months, मतलब ऐसा कुछ सिचुएशन दिखा दीजिए जिससे आपको है ना. तो ऐसा सिचुएशन, कोई का शादी हो गया था घर में है कोई बहन, कुछ कहीं ऐसा हो गया कि आपको मतलब होता है ना, वो जरूरी था इवेंट और उसमें बहुत जरूरी था वो, ज्यादा करके ये सब ही करना पड़ेगा. तो ये बात नहीं बोल सकते. स्टैट ऑडिट बाद में से ऑफ कैंपस कॉल आया था, लेकिन स्टैट ऑडिट से रिलेटेड नहीं आया, तो ऐसे नहीं. तो ऐसे कोई लगेगा कि ऐसे होता नहीं है जनरली, क्या नहीं 6 महीने तक अनएम्प्लॉयड रहेगा जस्ट बिकॉज ऑफ स्टेट ऑडिट के लिए वेट करेगा. सीए बनते उसको लगेगा कुछ ना कुछ बीमारी करना पड़ेगा आपको. तो जैसा सिचुएशन हो गया घर में, तो वो नहीं, एक्चुअली सर 2-3 साल पहले इशू हुआ था मेरे पापा के साथ, तो उसका भी मैं बता सकता हूँ. वो बोल नहीं, वो मानेगा ही नहीं कि आदमी 6 महीना तक अनएम्प्लॉयड इसलिए रहेगा. तो कल स्टेट ऑडिट का ही रोल चाहिए था, और स्टेट ऑडिट जैसा प्रोफाइल जो है ना वो हर जगह ही होता है, तो वो मानेगा ही नहीं ये बात में. तो ही विल नॉट गेट कन्विंस्ड. यही है कि बीमार करना पड़ेगा किसी को, या तो खुद बीमार होने से सर्टिफिकेट मांग लेगा. घर में बोले पापा का कितना उम्र है, आपका उम्र कितना है पापा का? 54. बोलते पापा को थोड़ा सा वो हो गया था, या बोलते पापा एक्चुअली सर हम बताए तो पापा को
पापा को एक्चुअली पापा को 3 साल पहले स्ट्रोक आया था सर, ब्रेन स्ट्रोक, तो उनका कब? ओपन सर्जरी भी हुआ है। अभी? 2019 में हुआ था, लेकिन मेडिसिन में चल रहे थे, तो बीच में एक्चुअली मेडिसिन बंद भी हुआ था, तो हम वो बोल सकते हैं कि मेडिसिन बंद हुआ था तो ऑब्जर्वेशन में था कुछ, तो मेरे को मैं अप्लाई नहीं कर पाया हाँ कोई पापा का मेडिसिन थोड़ा, ब्रेन सर्जरी पापा का। का, हाँ पापा को तबीयत वबीयत खराब था, तो उस टाइम आई हैव थॉट ये सब में कोई प्रूफ नहीं मांगता है, तो ये सब चीज सही बोलना होगा मेरे हिसाब से, और सही अब मेरे हिसाब से यही बोलने का कोशिश करेगा, ठीक है। ठीक है, ये मेन है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस बोलेगे तो आपको ऐसे ही वो नहीं लेगा वो, ठीक है। ओके, वाई वांट टू ज्वाइन बिग फोर? सर प्लीज सर, व्हाट यू सेड? वाई वांट टू ज्वाइन बिग फोर? याद रखिएगा ये वाला क्वेश्चन डिफिकल्ट था सबसे, बाकी टेक्निकल आपका ठीक है, हाँ। मूवमेंट थोड़ा कम करिएगा, टेक्निकल आप निकाल देगा। वाई वांट टू ज्वाइन बिग फोर? So I want to join Big Four, sir, because it is a firm which is recognized globally, sir, and there's a lot of good opportunities and work life culture, and I'll lot of learn. Get to learn a lot of things over here, and I think it's the best thing to start my career with. That's why I just want to join Big Four. Great. Do you have any questions for us? Sir, I don't want to ask that, sir, I'm going to give my 100%, my skills and knowledge to the role, sir. So in how many years or in how much time I can see myself in upper position or top positions of the firms? ये नहीं पूछना है, ग्रेड दिखाई दे रहा है इसमें आपका, इसको बोलना है कि हाउ इज योर लर्निंग एक्सपीरियंस इन दिस फॉर्म, ठीक है। हाउ वाज योर How's your लर्निंग? learning experience? ये दो चीज आपने जो गलत बोला ना, ये वाला और वो स्टार्टिंग में जो मैंने जो बोला अभी, ये वाला जो ये भी सर बोल सकते हैं सर, what according to you that what are key skills and that I should ऑडिट में work पता on? है क्या स्किल होता है, हाँ ऑडिट करके आया है तो ऑडिट में क्या स्किल होगा वो सब नहीं पूछना है, केबीसी थोड़ी ना हो रहा है, तो इसमें कल गलत जवाब नहीं देना है बस, गलत दे देंगे तो आउट कर देगा, सही देंगे तो कोई फायदा नहीं है, गलत देंगे तो आउट कर देगा, बस ये चीज है, ठीक है। तो वही मैं बोला ना, हाउ वाज योर लर्निंग एक्सपीरियंस अराउंड ईयर, डू यू वांट टू गिव मी एनी फीडबैक, व्हाट एरिया आई कैन improve, बस ये दो चीज आपको पूछना है ज्यादा, वेयर आई कैन improve और हाउ वाज योर लर्निंग एक्सपीरियंस इन दिस फॉर्म, ठीक है। तो ओके, आपका सीख है, आपका टेक्निकल वाइज यू आर गुड एट, ओके, और वो उसका वही बोलना जब ना बीमार हो गया था, ठीक है, बीमारी वाला बता दीजिएगा, जस्ट ये दोनों चीज सबसे जरूरी था। बाकी स्ट्रेंथ क्या है आपका? टीम बिल्डिंग, लाइक टू मोटिवेट पीपल, आई एम गुड इन मीटिंग डेडलाइंस, लीडरशिप अच्छा स्किल है मेरा, आई एम अ गुड लीडर, आई कैन क्लोज द डील्स, मतलब होता है ना, आई कैन हम्म। दूसरा से काम कराना आता है, ऐसा चीज बोल दीजिएगा। वीकनेस क्या बताएंगे? तो सर जैसे बोलते समय थोड़ा सा फंबल हो रहा है, तो उसका प्रॉब्लम नहीं होगा क्या उसका? आप बोलते समय फंबल नहीं हो रहा, मूवमेंट कर रहा है वो, आप कम कर लिया, बस मूवमेंट मत करिएगा बस, हम भी कर रहे हैं ऐसे, पर आप ज्यादा करते हैं, ऐसे करने लग जाता है, वो मत करिएगा ऐसे हाँ, नहीं, आपका थोड़ा बोलने सा, के बाद तो सर हम शायद कंट्रोल कर लें। आपका हाँ बस बोलने के बाद वापस हम में किया ना। हाँ वही है, आपका हैबिट है वो सबके साथ होता है, मैं भी करता था पहले, मेरे को टोक टोक अभी भी कर लेता हूँ बहुत बार, पता नहीं चलता, और इंटरव्यू में करेंगे तो 10 लाख रुपए चला जाएगा ना आपसे, ठीक है, वही बात है, बाद में करते रहिएगा। So, और वीकनेस क्या बोलेंगे? लेकिन आर्टिकल सिर्फ जब काम दिया था तो हम फटाफट करके दे देता था, तो रिव्यू नहीं करता था अपना काम को, तो वो कोई गलती था, बाद में हम रिव्यू करने लग गए, उससे हमको ना थोड़ा डांट मिलता था ज्यादा, जिससे कोई वीकनेस है नहीं, हम ओवरकम कर लिए ही, आई वॉज नॉट एबल टू रिव्यू माई वर्क प्रॉपरली, एंड बस सर समझ। प्रेजेंट वीकनेस, प्रेजेंट यही तो वीकनेस। प्रेजेंट ऐसे कोई हम है नहीं कोई सर ऐसे बोल सकते हैं सर, आई डोंट हैव एनी वीकनेस राइट नाउ, बट आई एम थिंकिंग ऑफ improving my communication आई skills, डोंट हैव एनी because मेजर I think this वीकनेस, is तो होता ही है सब में, आई डोंट हैव एनी, आई I डोंट don't नो, have any major weakness. I have I any don't major have any weakness. major weakness in relation to the Major. work. Okay. So Mm, I feel कि it measure I don't have any major weakness, but there is a scope of improvement in each and everything that we can do. mm. ऐसे कभी बोलते हैं ना स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो We सब चीज, माई टाइपिंग स्पीड इज स्लो, वी आर आई एम ट्राइंग टू इंक्रीज माई टाइपिंग स्पीड ठीक है, टाइपिंग स्पीड थोड़ा स्लो है, हम उसको फास्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है टाइपिंग स्पीड स्लो है तभी थोड़ा। भी हम एक चीज पूछ रहा था, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर रिपोर्टिंग जो होता है, वो जो हाँ, एप्लीकेबल है लिस्टेड कंपनीज और सम प्राइवेट कंपनीज को भी, IFCR, जैसे जो लिमिट है उसका हाँ हाँ। सो सर वो क्या, तो वो जैसे हम एक ऑडिट बताएगा उसमें 90 करोड़ का टर्नओवर है, तो उसमें तो ये एप्लीकेबल है ही।
तो हाँ वो क्या बहुत पहले से एप्लीकेबल है क्या ये 2015-16 से भी है? हाँ हाँ तो हाँ। इसमें भी अगर हम तो मेंशन किया टेस्ट ऑफ कंट्रोल, तो बोले कि वो पूछ लिया कि व्हाट टेस्ट ऑफ कंट्रोल यू हैव डन, तो क्या बोले फिर? नहीं पता। हम तो उसको टेस्ट ऑफ थ्योरेटिकल कंट्रोल नहीं बता में, सकते हैं। टेस्ट ऑफ कंट्रोल आपका वही नहीं हो गया ना, पता डिजाइन। मेरे को टेस्ट ऑफ पता है, लेकिन डिजाइन और प्रैक्टिकली टेस्ट ऑफ कितना किया ऑपरेट। वो बता। कंट्रोल टेस्टिंग में आपका वही हो गया टेस्ट ना, ऑफ सर डिजाइन आप एंड आरसीएम, वो तुम सर आरसीएम डिजाइन एंड बस। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल। हाँ इतना नहीं पूछे, स्टैट ऑडिट में टेस्ट ऑफ कंट्रोल ज्यादा नहीं पूछेगा वो, इंटरनल ऑडिट में पूछेगा वो। यहाँ पर आपको ये ऑडिट ऑफ लाइन आइटम ज्यादा कभी पूछेगा। अच्छा। और सर ठीक ये है। मैं बोल रहा था कि वो जैसे अगर इन्वेंट्री जो काउंटिंग है, जैसे वो जो ऑडिट कर रहा है वो उसका रॉ मटेरियल खाली केमिकल्स एंड केमिकल्स रहता था जो वेट करना हाँ पड़ता था। तो मुझे डू क्या, यू हैव डन हाँ क्या बोला, फिर से केमिकल्स बोलिए। रहता था रॉ मटेरियल्स में। जो जॉब वर्क था ना वो ना कलर करता था फैब्रिक्स को। तो सर उसका जो रॉ मटेरियल था ना वो खाली कलर्स और केमिकल्स था। तो पूछ लिया कि डू यू हैव परफॉर्म द इन्वेंटरी काउंटिंग ऑफ दैट, तो क्या बोलेंगे सर आई हैव डन और नॉट, व्हाट अबाउट दैट? बोल देना करा है। बिकॉज वो वेट करना पड़ता है और 31 मार्च को वैसे भी तो पॉसिबल नहीं, सब जानते हैं जाना। तो फिर तो रोल बैक क्या रोल बोलते हैं? फॉरवर्ड होता ही है ना, रोल बैक रोल फॉरवर्ड। तो सर ये एक, हाँ तो रोल बैक तो सर तो ये एक तो वेट, इसको वेट करना पड़ेगा कंटेनर्स को, एक वो चीज है। फिर पूरा कंजम्पशन निकाल के माइनस प्लस करके तब उसको निकालना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा भी है, फिर आप उसको ये नहीं किए है कि लगेगा कि नहीं ये किया फेक है, रहा है वो सर। बताओ, आप किया है कि नहीं किया है? नहीं किया सर, तो नहीं नहीं किया तो नहीं किया किया सर, है, बोलिए नहीं किया है, ना कर दीजिएगा उसको। नहीं किया। So ठीक only है। sir, the reasons were that the time was also limited, and we had a discussion with our partner that he decided that no, it is not possible right now. So it is complicated also. So ग्रैंड टोटल right ले now लेगा हमको it लग is रहा not. है, तो ग्रैंड टोटल थोड़ा नखरा दिखाता है। ग्रैंड टोटल है ना, तो नखरा दिखाएगा आपको बस। केपीएमजी होने से ले लेगा, केपीएमजी में ट्राई करिएगा, बाद में हो जाएगा आपका। नखरा ठीक है, दिखा, प्रैक्टिस। नखरा क्या मतलब ये बोले बहुत चूजी है क्या बोलते हैं? चूजी है थोड़ा, हाँ। थोड़ा चूजी है, ग्रैंड टोटल ले भी सकता है, डिपेंड करता है, ले भी सकता है, उसको रिक्वायरमेंट बीडीओ ट्राई करेगा, बीडीओ आरएसएम जो है ना, बीडीओ आरएसएम केपीएमजी, ये लोग ले लेगा आपको। अभी तो अभी अभी वैकेंसी है अब, है ना। अब लिंक्डइन खोल खोल के, अब ये टाइम है। अभी नहीं लगा तो भाई मुश्किल है फिर। तो भैया जो आप जैसे बोला कि चूजी है, तो उसको क्या प्रॉब्लम दिखेगा कि वो मेरे को रिजेक्ट करेगा? चूजी मतलब, आप बोल रहे हैं चूजी है, तो ये मतलब वो चूजी है, वो लोग ऐसे ही है, वो तो लोग का क्या टाइम। प्रॉब्लम उसको? प्रॉब्लम का बात नहीं, वो लोग है ना, पहले इंटरव्यू करा लेते, बाद में पता चलता है कि वैकेंसी नहीं है, कि वैकेंसी ओवरकम हो गया, वैसे करके। तो वो आपका तो अलग तो काम फेस टू करेगा फेस वैसे। इंटरव्यू, अच्छा, हाँ फेस टू फेस में भी कर सकता है वैसे? ठीक है, पर ले भी सकता है आपको, मेरे सब ठीक ठाक है बोल रहा है, खाली ये सर एक चीज बिहेवियर। और बोले सर, पीओ जैसे हम जिसको बोलना मेजर ऑब्जर्वेशन था पीओ स्प्लिट का, तो उसमें से उसका हम उसको करेक्ट कैसे करवाएं सर, उसके लिए क्या बोलेगा? पीयू का लिमिट और को कैसे जो आइडेंटिफाई अप्रूवल कैसे है, करें? आप अप्रूवल जो हम्म? है उसको लिमिट को कम कर देगा, कमती लेवल का में अप्रूवल होगा, तो वो एक तरीका है आपका। हम्म, हम्म। ठीक है। So we have this you recommending the management that हाँ you should हाँ, reduce the PO लिमिट, हाँ लिमिट जो authorization कम कर दो, हाँ। amount limit. समझ। सर एक एक क्वेश्चन था सर, इन्वेंट्री जो राइट ऑफ होता है और फिक्स एसेट जो राइट ऑफ होता है, तो उसका एंट्री ये होता है ना सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू इन्वेंट्री। हाँ और सर इन्वेंट्री फिक्स एसेट राइट ऑफ का क्या होता है सर, पीएल अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट, हाँ। डायरेक्ट पीएल में चार्ज होता है? ठीक है। और ठीक ये है। सर ठीक है, आप हमको कॉल कर लेना, ये ठीक है, आपका हो जाएगा, ऑल दी बेस्ट।